Welcome everyone. In this video, we are going to discuss about leading Indian pharmaceutical company, Syngene. Syngene is a very interesting company in the pharma space. और अगर आप Syngene समझ जाएंगे तो इस space में बाकी companies कैसे काम करती हैं वो भी समझ जाएंगे. So make sure you watch this video till the very end. So what is Syngene? Syngene is a company. It is an integrated research, development and manufacturing service organization, also called as CRDMO in short. This is the first of its kind in India, right? It has 4 business divisions: discovery service, development service, manufacturing service और dedicated R&D centers. अभी आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि what are these 4 things? How is discovery service a business division? What is a discovery service? Right? How is R&D center a business division? But I promise you, as you move forward, I'm going to explain each of these things in such a simple manner that you're going to hopefully understand it very well. So what is the vision of the company? They say that their vision is to be a world-class partner delivering innovative scientific solution. Now you need to understand this carefully. They are saying that their vision is to be a partner. Partner किसके partner बनना चाहते हैं ये? You know, this is giving us a hint of where the presentation is going and what the company is all about. So just before we dive into the core business, let's have a brief overview of their management and their what sort of board they have. So 56%, half of it are independent directors, 1/3 of them are non-executive directors, and only 11% of them are executive directors. And you can see the dichotomy of male and female directors. You can see almost half of them are females. So this company has a very good representation of female leadership. That's nice to see. Now the pharmaceutical value chain. इससे पहले videos में भी मैंने pharma की value chain पे बात की थी, but that was a different angle, and this is a different angle which you will find very interesting. So there are 2 parts to this. One is research and the other is development and manufacturing. तो जो पहला हिस्सा है research, that you can see has basically three verticals to it: research, discovery and preclinical. This entire thing is sort of part of the broader research phase of a drug discovery process. और जो कंपनी ये करती है, जो कंपनी ये तीनों काम करेगी, they are known as CRO or contract research organization. And obviously Syngene is doing this, that is why it is a CRO. And what is the next stage? Next stage comprises of clinical, registration and manufacturing. And manufacturing at the end is basically the formulation and finished dosage part. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो please make sure you watch that so you'll understand what is happening here. So clinical, registration and manufacturing, जहाँ वो दवा फाइनली रजिस्टर होती है और मैन्युफैक्चर होती है और फार्मेसीज में वो जाके डिलीवर होती है, एंड पीपल लाइक मी एंड यू बाय दोज मेडिसिन्स. दिस पार्ट इज CDMO. जो कंपनी ये काम करती है, they are known as CDMOs, Contract Development Manufacturing Organization. Contract Development and Manufacturing Organization. और क्योंकि Syngene is present throughout this entire value chain from research to discovery to preclinical trials to clinical trials to registration to manufacturing, then it is a CRDMO, Contract Research Development and Manufacturing Organization. So all throughout the value chain Syngene is present. Therefore I think it is one of the most interesting and one of the success stories of Indian pharma space, right? अब ये सब होता क्या है और ये होता क्यों है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि अगर Syngene रिसर्च कर रही है तो किसके लिए रिसर्च कर रही है. अगर Syngene डिस्कवरी कर रही है और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है तो किसके लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है, किसके लिए डिस्कवरी कर रही है, किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. तो इसका जवाब ये है, इसका आंसर ये है कि Syngene जो ग्लोबल बिग फार्मा कंपनीज़ हैं, स्पेशली दोज लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका की जो बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं उसके लिए रिसर्च कर रही है, उनके लिए डिस्कवरी कर रही है, उनके लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. तो सवाल ये उठता है कि Syngene उनके लिए क्यों कर रही है. बल्कि ये भी सवाल उठता है कि वो बड़ी कंपनीज, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो Syngene से ये काम करवा रहे हैं, है ना. इसका जवाब हम अगली स्लाइड्स पे देखेंगे. और अगर आप सिर्फ इतना समझ जाएं तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे इस फार्मा स्पेस के बारे में, स्पेशली द वे थिंग्स हैपन इन इंडिया. So big pharma companies in the US like Baxter outsource their research and development to Indian companies like Syngene, Indian contract research and development organizations like Syngene. Why? Because first reason, cost effectiveness. Outsourcing R&D to countries like India can be more cost effective for pharmaceutical companies, right? Labor and operational costs are lower in India compared to US.
allowing companies to save money. अब यहाँ पे सिंजीन ने जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, हज़ारों साइंटिस्ट को एम्प्लॉय किया, है ना, पूरा सिस्टम बनाया रिसर्च का, डेवलपमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसमें पैसे खर्च हुए. लेकिन अगर यही चीज़ बैक्स्टर फॉर एग्जांपल या कोई फार्मा यूएस की फार्मा कंपनी यही काम यूएस में करे तो 5-6 गुना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन ज़्यादा महंगी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा महंगा है, वहाँ के साइंटिस्ट जो सैलरी लेंगे वो 3-4 गुना 5-6 गुना ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंडियन साइंटिस्ट जो सैलरी लेते हैं. तो हर चीज़ वहाँ ज़्यादा महंगी है यूएस में. तो अगर वही चीज़ यूएस इंडिया की कंपनी को आउटसोर्स कर दे तो यूएस की कंपनी को फ़ायदा होता है, बिकॉज इट्स कॉस्ट इफेक्टिव फॉर देम, दे आर सेविंग मनी ऑन देयर R&D, राइट. So that's reason number 1. Reason number 2 is focus on core competencies. By outsourcing R&D activities, big pharma companies can focus on their core competencies such as marketing, distribution, and regulatory affairs. This specialization allows them to optimize their operations and bring new drugs to market more efficiently. तो जो बड़ी companies हैं, they already have the market share globally. They can market new drugs, they can distribute, they can deal with the regulatory hurdles, they can do the sale, they can bring in the revenue. तो वो उस पर फोकस करना चाहते हैं. जो छोट-पोट काम है कि भाई तुम लैब में बैठ के रिसर्च कर रहे हो, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, they want to outsource it to other players who can do it on a more cost effective manner, right, so that the big companies can focus on bringing in the revenue, on doing the sales, on doing the distribution, right. So that's the second reason. The third reason is expanded capacity. Outsourcing R&D to CDMOs like Syngene can provide pharmaceutical companies with additional research capacity without the need to invest in expanding their own facilities or hiring more staff. This is a very important point. तो ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक Amgen एंड BMS एंड Baxter, ऐसा नहीं है कि इनके पास साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इनके पास है, बट जस्ट to do more than what they are currently doing, instead of setting up more facilities, instead of hiring more staff, वो अपना एक R&D का हिस्सा थोड़ा सा आउटसोर्स भी कर देते हैं CDMOs को like Syngene to save on cost. The other is risk sharing. Drug development is a complex and costly process with no guaranteed outcomes. है ना, उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत वक्त लगता है, with no guaranteed outcomes. By collaborating with CRDMOs like Syngene, pharmaceutical companies can share some of the risks associated with R&D, as these organizations often work on a fee for service or outcome based contractual agreements, as we will see in upcoming slides. तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स बड़े क्लाइंट्स के जो हैं सिंजीन जैसी कंपनी के साथ ऐसे होते हैं कि जब हमें ये आउटकम मिलेगा तभी हम आपको इतना पैसा देंगे, या अगर जब आप इतना काम करेंगे तभी हम आपको इतना पैसा देंगे. तो माइलस्टोन बेस्ड फी स्ट्रक्चर भी होता है. तो इससे जो बड़े कंपनीज हैं उनकी थोड़ी सी रिस्क कम हो गई, ऑपरेशनल रिस्क कम हो गई. तो दिस इज अनदर रीजन दैट दे गिव वर्क of research and development to Indian companies like Syngene. Finally, faster turnaround time. Syngene and other CRDMOs typically focus exclusively on research and development services, which means they can dedicate their resources and attention solely to these tasks. As a result, they may be able to deliver faster turnaround times for drug discovery and development projects compared to in-house teams, right? तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अमेरिका की कंपनीज इंडियन कंपनीज को R&D प्रोजेक्ट्स क्यों देती हैं, और दिस इज़ द सोल ब्रेड एंड बटर ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट CDMO कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडिंग सिंजीन, राइट. तो अब जैसे इस पिछली स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बात की थी कि रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, प्री क्लिनिकल करते हैं, क्लिनिकल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. व्हाट डज दिस एक्चुअली इंटेल? सो लेट्स लुक एट दिस स्लाइड. सो डिस्कवरी सर्विस, right? So they have their own processes and systems and infrastructure for drug discovery, right? With capability across multiple modalities, including small molecules, large molecules, peptides, oligonucleotides, antibody drugs, PROTACs, which are used for, researching cancer treatment. PROTACs पे भी हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, but I just want to keep this presentation short, right? उसके बाद डेडिकेटेड R&D सेंटर्स हैं. तो सिंजीन अपने कुछ क्लाइंट्स को पूरा R&D सेंटर बना के उन्हीं के लिए डेडिकेट कर देता है. सो सिंजीन हैज़ रिंग फेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट, डेडिकेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ऑफ साइंटिस्ट, एक्सेस टू एंटायर सिंजीन इकोसिस्टम फॉर स्पेशलिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो सिंजीन के 3 क्लाइंट्स ऐसे हैं, हम आगे स्लाइड में भी देखेंगे कि 3 क्लाइंट्स सिंजीन के ऐसे हैं, एमजन, बैक्स्टर और BMS.
जिनको सिंजीन ने पूरे पूरे R&D सेंटर बना के दे रखे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट. देन डेवलपमेंट सर्विसेज, प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल ट्रायल्स. तो ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पूरा सिंजीन इन हाउस करता है अपने क्लाइंट्स के लिए. एसोसिएटेड सर्विसेज टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ्टी, टॉलरेंस एंड एफिकेसी ऑफ द सिलेक्टेड ड्रग कैंडिडेट. और जब सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, देन they also have manufacturing of small and large molecules for commercial purpose, right? So this is basically the entire business of Syngene. Moving on, they have 4 facilities in India. Bangalore में है 2 campuses, then Hyderabad में है और Bangalore में है. For biologics, for discovery services, 1 for API. So you can just have a look at the slide. Then industry growth. तो मैंने जैसे कहा कि ये CRO में भी हैं और CDMO में भी हैं. So CRO industry was just $18 billion in 2017 and is expected to go to $49 or $50 billion by 2026, growing at a CAGR of 14%. So CAGR stands for compounded annual growth rate. So 2022 से 2026 जो growth rate projected है वो 14% की है annual growth rate. CDMO on the other hand will go from $39 billion from 2017 all the way to $143 billion in 2026. So right now it's at almost $90 billion. तो 90 billion से 143 billion जाएगा. So इसका जो compounded annual growth rate project किया जा रहा है वो 17% है from 2022 to 2026. So this is a larger market, both in terms of size and in terms of growth. Then pricing options. So they have different kind of pricing options. One is fee for service, right? Agreed service delivered within a defined scope. तो इसमें फिक्स्ड फी है और फिक्स्ड उसका स्कोप है कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे, इसके बदले में आप हमें इतना काम करके दीजिए. That's one. Other is full time equivalent. So scientific personnel working full time on client projects, right? तो इसमें वो अपने कुछ अच्छे खासे साइंटिस्ट जो है वो पूरा क्लाइंट को दे देते हैं कि ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और हमारे ये 50 साइंटिस्ट, 100 साइंटिस्ट, 200 साइंटिस्ट इन्हीं के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इन्हीं की ड्रग डिस्कवरी पे काम करेंगे, इन्हीं के क्लिनिकल ट्रायल्स पे काम करेंगे, इन्हीं के प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में काम करेंगे, इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, राइट? उस बेसिस पे भी प्राइसिंग ऑप्शन होता है. देन दे हैव डेडिकेटेड R&D सेंटर्स. सो क्लाइंट्स आर प्रोवाइडेड विद कस्टमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर R&D नीड्स, राइट? देन रिस्क एंड रिवॉर्ड, माइलस्टोन बेस्ड मॉडल encompassing a portfolio of research projects. तो रिस्क रिवॉर्ड है, इसमें रिस्क शेयरिंग होती है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्लाइंट कहेगा कि जब इतना काम होगा तो हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना काम होगा तो इतना देंगे. तो इस तरीके से भी होता है. देन आउटकम बेस्ड मॉडल बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ डिफाइंड आउटकम एंड लिंक टू प्रोडक्टिविटी गोल्स, राइट? सो दिस इज देयर डिफरेंट pricing options, and a client can also choose multiple of these or a combination of these. Syngene operates, as I already said, dedicated R&D center for 3 clients right now: Amgen, Baxter, and BMS. Which these are 3, these are 3 top pharma companies in the world, of other big pharma companies, right? Types of customers: they have biopharma companies who they serve, they have animal health companies whom they serve, they have agrochemical companies whom they serve, they have consumer product companies which they serve, they have chemical and polymer companies which they serve. So this is their list of clients. Not all the clients, so they have 400 plus active customers, including 8 out of the top 10 global pharma companies. तो ये अलग अलग categories में इनके अलग अलग जो हैं customers हैं. They have also collaborations with different universities like Cornell University, Indiana University, UK Research and Innovation Group, King Abdulaziz University in Saudi Arabia, जहाँ पे ये अपने research collaborations करते हैं. So they have some of the top universities, top pharma companies, top consumer product companies, including Unilever as their clients, and they are very well diversified in terms of their client base. The company holds 400 plus patents jointly with clients and has a base of 5,000 plus scientists. The total head count इनके 6,000 plus हैं, उसमें से 5,000 plus scientists हैं, where 62% of them hold a master's degree and 10% of them hold PhDs. तो अगर 5,000 scientists हैं, उसमें से 10% PhDs, and that means they have around 500 plus PhD holders in their R&D division. Client base, जो उनके clients हैं, so as I already sort of highlighted that most of their revenue and most of their clients are from the US. 72% is from the US, 15% is from Europe. That makes up around 87%. So almost all of it is from the Western world. Then they have 3% India, 3% Japan, and 7% rest of the world. Revenue breakdown, so bulk of their revenue is coming from CRO, contract research organization.
and around 1/3 of it is coming from CDMO or Development and Manufacturing Organization. तो ज़्यादा जो इनका revenue आ रहा है वो research से आ रहा है compared to manufacturing. Now this is their sales figure. From 2019 their revenue was 1,826 crores, and in 2023 financial year 2023 they have done almost 3,200 crores of revenue. So that's a decent revenue growth right there. Profit has increased from 332 crores in 2019 to 464 crores in 2023. Right. In terms of cash flow from operations, we have gone from 630 crores in cash flow from 824 crores of cash flow in 2023. तो 2019 में इनका जो कैश फ्लो था वो 650 करोड़ का था तकरीबन, और अब जो इनका कैश फ्लो है वो 8,024 करोड़ रुपए का है. उसमें से यू कैन सी द ग्रोथ फिगर्स हियर, यू कैन सी द कैपेक्स. तो तकरीबन हर ही साल ये लोग कम से कम 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करते हैं, which just shows that their business is growing. They need to expand their capacities, they need to expand their working strength, the number of scientists they have, the number of people working. They have to keep expanding their team, keep expanding their facilities. तो इसलिए हर साल ये लोग तकरीबन 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स करते हैं. कैपेक्स स्टैंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड देन 2019 में इनका जो फाइनल फ्री कैश फ्लो था वो सिर्फ 47 करोड़ का था, लेकिन इस साल 2023 में इनका जो कैश फ्लो आया है वो 300 करोड़ रुपए का आया है, एंड लास्ट ईयर वाज 100 करोड़. सो फ्री कैश फ्लो में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है. Financial ratios, you can see operating margin and net operating margin. You can have a look at that. So they have a very decent operating profit margin of around 30%. Net operating margin is around 15%, more or less. And then you can see return on capital employed right now is almost 14%. Return on asset is 8%. Return on equity is 12.8%. This is a financial snapshot. So I've already sort of given you the numbers right previously. So revenue is growing at a CAGR, annual growth rate of 14%. Earnings have been growing at 13%. Profit has been growing at 9%. Now this is for the last 5 years. If you look at the last 2-3 years, then it is higher. So EBITDA margins are around 30%. We already saw gross block has been improving quite a lot. Has been increasing quite a lot. Then this is the price, and this is the PE and EPS. So price, you could see that the stock was consolidating for almost 4 years in the 500 to 600 rupees range, and then finally broke out a few months back, and now it's almost about to hit 800. Its average or its median PE has been 54. Right now the PE is almost 67, so it's trading way above its median PE. Although the EPS or earning per share has been increasing, लेकिन इसका PE इस वक्त बहुत ज़्यादा है. मतलब 67 का PE तो objectively speaking भी it's on the higher side, but even if we look at the historical valuation of this company, the PE is currently at the higher side, and we know that the stock has been consolidating for a very long time, and it has finally broken out, and all the market in general is at all-time highs. So I will be very, very careful entering into this stock right now. This video was mostly for educational purpose. I hope you guys have benefited from this, but anyway, even if the stock is overvalued right now, the story is not over. The story is not over for Syngene. India is still a very small market compared to the global market, so there is still a very long way to go. And from a long-term perspective, this company seems like a good bet for me. I might not enter right now, but this is definitely a company that will be on my watch list. Thank you all for watching, and if there are any questions, I would be happy to take them in the comment section. Thank you.